Uh, yeah, sure. So to give you, let me redirect you. So for machine learning, that is sufficient as of now. Yeah. For machine learning, if you want Python, you can go to our channel. You can hear me, right? And you can look at this evening batch. So let me just share this one also with you. Okay, so although I have given you the machine learning, you can also refer this one, the evening batch one. This will, so this evening batch has all the Python classes, and I have given you this machine learning. So this has all the, sorry. Yeah, there was morning batch, but it got like it was only related to Python only. So those all lectures are here. So I understand. So as of now, like Python is over, so you can uh, work like with these lectures as of now. Going ahead, what I will do is I will have a like a 1 week Python course lectures. In that 1 week, every day we will go with 2 hours lecture and we'll cover as much as Python we can. If that is okay. Yeah, cool. All right, so let's move on to our today's lecture, and that is called as 2 hours lecture. We'll cover as much as Python we can. Okay, getting voice. Nice. All right. So today we are going to learn outlier treatment. So this is related to like the topic is related to last lecture that we had on evaluation metrics. So where we have saw multiple evaluation matrices. Yeah. Hello. Is remained. Are you asking? Can you, how much percentage? So we can say Python. We are giving a weightage to Python as 50%. Yeah. So we are almost done with 50%, and the rest 50% will be done now. So why I'm giving 50% because I have first of all I have explained Python in a very I would say I took like more than enough time to explain Python, and what happened is we could have covered it in a like a month also, but we took almost 2.5 months to cover it. But I wanted to make sure that everyone understand these concepts. Going ahead, AI will write code for you. So you can cover Python in like 2 weeks, 3 weeks. That is also sufficient. But as far as interview concern and also I explained it in a long way, I would say. But now we are left with machine learning, deep learning, natural language processing, and AI skills or AI skills. Yeah, topic. So that should take around 2.5 months. All right, coming back to what we are going to learn. The name you'll find, so if you can search as Sumit Kumar, this is the URL, Sumit Kumar, but if you don't find it, you can search Sumit Kumar space Python, so you'll get this logo. Okay. All right, is that all? Okay, Lokesh, thank you. So, the today's topic, guys, coming back.
So in previous lecture, we have seen a lot of matrices with respect to the machine learning or regression. Mainly, we have learned root mean square error, mean square error, and mean absolute error. We have seen the differences. We have seen. I have given explained in a use case scenarios also, and then we understood where then we understood you then I explained giving the formulas also and some examples also. So if you want to go to understand these matrices again, you can check these matrices on our YouTube channel, and I have already shared in our WhatsApp community also. Okay, so let's continue with the today's topic, and the topic name is outlier treatment. Okay, so this is a very crucial topic when we consider, machine learning. So when we want to learn machine learning, this is very crucial. Why? Because whatever data you are going to get is will not be very clean. Uh, you need to clean your data. So the one of the thing is you need to treat the outliers. So first of all, we must understand what is outliers, right? So to understand what is outlier, one more second. Okay. So to understand what are these outliers, like imagine your classroom is preparing for a race. Okay, so there is a race organized, right? So everyone lines up. So in when we were kid and we used to have assembly, right? So everyone lined up. So the one who is very shortest would line at the front, and one who is very tall line at the end, right? So you may be making sense there. And you measure their heights to decide the teams. Okay, so most students are between, let's say, 150 centimeters to 170 centimeters. So I can also draw a diagrams, considering these scenarios. Okay, so let's say all the students are, let this load first. Quickly, my row. I think it is almost there, almost there. Meanwhile, we can say outliers in machine learning. So I wanted to make sure. Okay, we have a good images on the internet, or maybe this one. All right. Before that, the example I was giving is so. So we were discussing is, let's say you are having the students are lining up. So let's say this is your first student, and these are student as of now. Okay, this is your second student, this is your third student. Okay, and all these students heights are, let's say, 150 centimeters to 170 centimeters. Okay, so all these are ranging from 150 centimeters to 170 centimeters. But you always, like, there is one guy whose height is directly at around, let's say, 230 centimeters. Okay, he's like 230 centimeters tall. Now imagine you are having a race. All guys are having a race. Can you say this race is a normal race? Like you have a guy whose height is 230 centimeters. Are they part of a normal race, or they outlier that team, right? Because this guy has an added advantage over these all normal heighted students, right? So we consider this guy as a outlier. Okay, we consider this guy as an outlier. So this is another example why this
like whenever you are going to get a data, it will have these, like most of the point will have a common space in your data set, but there will be some data which will be somewhat out from the most of the points. This is another example. You can say, see, so this is like a, most of the students are here, most of the data points are here, but this is an outlier. Okay, this is an outlier. So why this happened? When this happened? This happens when last time I gave a Diwali ka cell. Okay, so this is, let's say, this is a x and y axis chart, and this is number of goods. Okay, not literally number of goods. Let's say this is 10 crore cell. This is 20 crore cell. This is 100 crore cells. Okay, here your sales price is there, and here you can say this is January, right, this is February, this is November, and this is December. Okay, so rest are here. Okay, rest months are here. Now you can see in January, your company had around 10 crore ka sale. Okay, in February, your company had 11 crores, then 9 crores, then 10 crores again, and then so on and so on. As soon as November hits, your company like makes sales around. This is a sales of clothing company. Okay, clothing company. So you are selling clothes. So in January you sold around 10 crores clothes, and in November what happened is the sale rise at around 90 crores, and here in December the sales rise at 100 crores. So what happened here? Came in. So people usually buy a lot of clothes in Diwali. So this is your regular, this is a common data, but these are treated as outlier. Okay, these are treated as outlier, and these are seasonal changes. You can say these are seasonal changes are there, right? So this is affecting your entire data. This is uh, entirely affecting your entire data and creating a bias. So we will learn variance and bias in coming lectures. But what we need to do here is we need to treat these outliers, and there are different ways to do it. Okay. The very first thing we can write is the definition, right? So what we can write first, we can say, let me get a text box. Here we can say outliers, right? And inside this, we can say outliers are redundant, redundant, redundant observations. Okay, why these are redundant? These are more main, like most of the times these are useless. We don't really want these data most of the time. So we most of the time we directly delete these data. Okay, most of the, like 90% of the time we directly delete this data. But sometimes what we want to do, we want to keep it, but we want to treat it in a some way that we are including that data, but by doing some operation on it. Okay. So next, what I was writing, outliers are redundant observations because because they spoil the the performance of the model. Okay, so this is the first thing. The second thing that we can write is uh, points which are extremely far from the normal observations. Okay, observations are means your data points. Okay, observations means your data points. So the points, let me just get this over here, and we can give this as a title, and this is how it. So outliers are nothing but the point which are extremely far away from your normal observation. Okay, if you see here, this is your normal observation, right?
and the other points are your outliers. Those are extremely away from your data point. Okay, from your main data. These are extremely away from your main data. Okay, so what we need to do here is we need to treat. Okay, so you have been listening to this. Yeah, okay, treatment. अरे क्या है भाई ये treatment, right? So let's understand what are the treatments available there in the for the outliers. Okay, let me just get one more box here so I can say treating the outliers. Okay, so the very first is we can directly drop, meaning जो भी outliers है, these all outliers we directly cut from the data. We directly delete them from the data. Okay, so how that can be done, I will also show you. Second method is we do visualizing. Okay, meaning what we do here is we replace the outliers with some some meaningful data. For example, what we do is we add mean there, mean meaning average, we add median or mode or maybe like squares or roots, whatever is like these are mostly statistical computational things. Okay, so statistical with using the statistical computational things will be replacing the data. So what we do is instead of these outliers, we add some mean of this entire data set. So let's say this is entire data set का mean क्या रहेगा? Somewhere here in between, right? So this outlier will shift to inside the data. Okay. Try to imagine this. If you don't understand, don't worry. You will also get when I will explain all these things. Okay. The next thing that we do is we do threshold split. Okay, threshold split. So what this means is this is also something is called as dropping, something kind of a dropping. So what we do is we keep a threshold of, let's say here you can see the threshold can be considered as what this is like 100K. So if you keep the data size at around 100K, what will happen is इसके इस 100K के लेफ्ट साइड का जितना भी डेटा है वो आएगा और ये सारे इसके अंदर से कट जाएंगे, राइट? This is kind of again dropping the data sets. Okay, and this is another thing you can like if in interview HR will ask or a hiring manager will ask, you will have this answer that okay, you can drop, but there is another thing, threshold split. All right, then another thing is called as normalizing. So this is kind of again you are normalizing the data, meaning you are keeping all the data in a same format, or like basically what will happen is the importance of this outlier will drop down and it will again try to automatically merge. So that I will also explain you in theoretically or in the code. Okay, and there are more like some transformation we do. Okay, transformation. So first thing we do is we do log transformation, log transform. So we basically use log on the data. So for example, if your outlier value is 88, okay. So what we do is we do the log of 88. So what happens? The log of 88 value is less. इसका error आ जाएगा. Anyways, so log of 88 का value is somewhere around 10 or no. Okay. So we do the log transformation. We do the normalizing. So this is one of the uh, method. So what happens here is in normalizing, you convert everything in between, you convert every data into 0 and 1. 0 के and 1 के बीच में सारा डेटा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ये 0 के पास है, फिर ये 50,000 है, 1,000 है, 20,000 है, 20K है, 10K है, राइट, 100K है.
तो दिस एंटायर डेटा हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज कर देंगे 0 और 1 के बीच में। okay? 0 एंड सबका वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन इज एंटायरली सब लाइक एक ही फ्रेम में आ जाएंगे, एक ही यूनिट्स में आ जाएंगे या नॉर्मलाइज हो जाएगा। और इसी का एक भाई रहता है स्टैंडर्डाइजिंग। इसमें क्या रहता है, -1 to +1। ओके, सो दिस इज लाइक 0 to 1 कन्वर्ट करेंगे डेटा में, यहाँ पर हम -1 to 1 में कन्वर्ट करते हैं। So what happens here is most of the time uh, your data gets converted into a different, like in a different scale, and ultimately you get rid of all the outliers. So this will also, we will have a look at it. Then there is this one special method is called as box cox transform. Transform. And then there is a square root. So box cox क्या होता है? So this is like a visually you can see the data, the box cox transform. If I directly add here image, maybe this can explain a bit, or you can, this is also something kind of visually you can see the data. What you will do is you will keep this much of data only, इतना ही डेटा, लाइक 0 से यहाँ तक 0.5 एंड 0.5 तक का ही डेटा लोगे, और ये वाला डेटा आप उड़ा दोगे। सॉरी सॉरी सर, तो ये IQR में होता है। एक्चुअली यू विल डिलीट दिस डेटा, 95% के ऊपर का जो डेटा है ना, ये डेटा आप उड़ा दोगे, डिलीट कर दोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आउटलायर का ट्रीटमेंट क्या होता है, आप डिलीट कर देते हो या फिर उसका शेप चेंज कर देते हो या उसको छोटा कर देते हो या उसको मीन कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म। स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म में क्या रहेगा, वट एवर द वैल्यू, लाइक लेट्स से फिर अगेन 49 फॉर एग्जांपल आपका अगर ये है आउटलायर वैल्यू है, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल बेसिकली अप्लाई ए स्क्वायर रूट, स्क्वायर 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 नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट में भी कुछ इस तरीके से रहेगा, बिकॉज numpy import in क्या import y as np। तो इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा 7, तो ये 49 कन्वर्ट हो जाएगा 7 में। सो दिस इज हाउ यू आर उसका वैल्यू कम कर रहे हो आप। तो जो वैल्यू इनिशियली यहाँ पर था वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, राइट, उसका वेटेज ही कम कर दिया आपने, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अनदर मेथड। उसके बाद आई गेस, मतलब ये सारी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, ठीक है। सब में एक्चुअली एक ही चीज हो रहा है। अभी क्यूब रूट में भी क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटी वैल्यू आ जाएगी, ओके। एंड देन देयर इज दिस रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्म, ओके। तो ये रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्म में भी क्या होता है कि अल्टीमेटली इन सब में क्या होगा, आइदर यू आर कॉपीइंग और डिलीटिंग, और यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द आउटलायर, उसको उसकी वैल्यू ही चेंज कर दे, जो बाहर था, डेटा के सबसे बाहर था, उसका वैल्यू ही आपने चेंज कर दिया। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया कि आपने डेटा को जो भी आउटलायर्स थे उसका शेप ही चेंज कर दिया। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन द आउटलायर ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और सबसे फेमस इसमें यही है, लाइक यू कैन रिप्लेस विथ दिस मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मीन से आप रिप्लेस कर देते हो, एंड दैट्स इट। यही मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही करते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। और आइदर वो ड्रॉप कर देंगे, डिलीट ही कर देंगे, झंझट ही नहीं चाहिए अपने को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऑल दीज नोट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये सारी टेक्निक्स होती है। बट ये अब एक पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डायरेक्टली जंप ऑन टू ट्रीटमेंट,
ओके, हम डायरेक्टली जंप हो गए ट्रीटमेंट। बट सबसे पहले यू नीड टू डिटेक्ट कि ड्रॉप आपके डेटा में आउटलायर्स है या नहीं, राइट। आउटलायर्स आपके डेटा में है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि डिटेक्शन। डिटेक्शन कैसे होगा कि भाई आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ एक तो ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा अच्छा ये मेरे आउटलायर्स है। तो फिर आपको ऐसे कट मार दोगे और ये सारा डिलीट हो जाएगा। या फिर इनको इनका स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपके या मीन निकाल दोगे और ये सारे वैल्यूज आपके नॉर्मल डेटा में आ जाएंगे। देन यू विल गो फॉर मशीन मशीन लर्निंग। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि मशीन को समझना चाहिए कि अच्छा, अगर उसको समझा कि देयर आर दिस, कुछ डेटा इतना दूर भी होता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका बिहेवियर चेंज होता है। दैट्स व्हाई वी वांट अ डेटा इन अ लाइक बस पैटर्न रहना चाहिए कि अच्छा सारे डेटा के कुछ ऐसा 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 पैटर्न है, कुछ ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए। So that we don't want in our machine learning. Machine to understand, like machine to get confused. Machine confused नहीं होनी चाहिए उसको सिखाते टाइम, ठीक है। So that's why we do. So first thing क्या रहेगी कि हमें डिटेक्ट करना है। What we do is we detect. So first thing will be detecting the outlier. Okay. और उस डिटेक्शन के अंदर देर आर दिस डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जो हम वो भी सीखेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज लेट्स से यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं चेक इफ द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो भी डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या। अभी उसका मतलब क्या हुआ? So let me create some random data. Let's say if I say array1, ऐसे लिख देता हूँ array equals to np dot random dot int। अब ये सारा हमने numpy में सीखा था, if you guys remember। So I'm saying कि मुझे 10 से लेकर 100 के बीच में नंबर दे दो और सारे नंबर मिला के मुझे 20 नंबर, सब 20 नंबर्स रहेंगे और 10 एंड 100 के बीच में रहेंगे। रन दिस, समथिंग लाइक आई विल गेट अ डेटा, ठीक है। सो कंसिडरिंग दिस इज माय डेटा, अभी मुझे कुछ इस तरीके से डेटा मिल गया। सो वी हैव दिस लाइब्रेरी कॉल्ड एज cborn। ओके, cborn एज एसएनएस, राइट। सो cborn क्या करता है? cborn पोटेंशियली, cborn क्या करता है? इट विल गिव यू दी चार्ट ग्राफ, ठीक है। और cborn के अंदर एसएनएस डॉट KDE प्लॉट, एक KDE नाम से प्लॉट होता है, ठीक है। इसके अंदर, उसके अंदर हम हमारा एरे डाल देंगे, ये वाला एरे, एरे डाल देंगे, ठीक है। एसएनएस कौन सा है? ये वाला एसएनएस। उसके अंदर एक KDE प्लॉट फंक्शन है, उसके अंदर हमने ये एरे डाल देंगे, basically ये सारे पॉइंट डाल देंगे। व्हेन आई रन दिस, so I should get something like, so here you can see मेरा जो डेटा है काइंड ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब उसमें ये काइंड ऑफ कंसिडर्ड एज आउटलायर या ये 120 आउटलायर, बट ये इतना ज्यादा आउट नहीं है डेटा, बहुत ज्यादा बाहर नहीं गया है डेटा, बहुत आउट ऑफ शेप नहीं। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बेल शेप। तो अगर ये ऑलमोस्ट इक्वल टू बेल शेप है, इट मीन्स इट इज नथिंग बट अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, ठीक है। First of all, what I have done is I have checked whether my data is normally distributed or not. Okay. The next thing I can do, so let me just pick one more array, let's say array 2, और उसको मैं array जो 1 है उसका कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, उस array 2 के अंदर मेरा array 1 डाल दिया, ठीक है। जो मेरा ये array 1 था ना, ये डाल दिया। So when I check this array 2, ये कुछ बेसिकली वो सेम ही रहेगा, ठीक है। This will be the same. Now what I will do is array 2 के अंदर लेट्स से मैं 10th पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे आई विल ऐड दिस 200, ठीक है। एरे 2 के लेट्स से 12th पोजीशन पे
let me add 260 and array 2k, one more, let's say fifth position पे let me add minus minus 200. ठीक है, so now when I call this array 2, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिखेगा ही नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, कहाँ error दिया है, array 2 is not, array 2 अभी तो डिफाइन किया है भाई। अच्छा, array 2 का स्पेलिंग अलग हो गया guys। ठीक है, तो array 2 कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये -200 भी दिख रहा है इसके अंदर, 200 भी दिख रहा है, 260 भी दिख रहा है, एंड बाकी जो हमारे पहले वाले थे वो भी दिख रहा है। ठीक है, ये पहले वाले जो थे 41, 76, 15 एंड all the data is here. But now if I ये इससे अलावा ओनली इतना ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं होता sns डॉट के डी प्लॉट डॉट एरे 1 की जगह यहाँ पर 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 ले लेंगे, व्हेन आई रन दिस यू कैन सी, देख ले, हियर नाउ यू कैन सी जो हमारा -200 है यहाँ पर है, 200 एंड 260 यहाँ पर है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज लाइक दिस इज अ बेल शेप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, बहुत छोटा हो जाएगा, इसको बड़ा कर देंगे। तो नाउ इफ यू सी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा डेटा बेल शेप है। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ये मुझे चलेगा, बट दीज एंड दिस डेटा इज कॉल्ड एज माई आउटलायर्स, ये मुझे नहीं चाहिए, ये डेटा में ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। सो दिस डेटा, मैं बस एक एग्जांपल दिया आपको कि ये डेटा में आउटलायर किस तरीके से दिख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप आउटलायर को मतलब विजुअलाइज कर सकते हो बाय डूइंग दिस के डी ई प्लॉट, इसको क्या बोलते हैं, के डी ई प्लॉट। ओके, के डी ई प्लॉट, तो इस यूजिंग दिस के डी ई प्लॉट, वेयर आर योर आउटलायर्स, राइट। तो हमने डिटेक्शन का एक मेथड सीख लिया। हमने क्या करना था, हमें सबसे पहले डिटेक्ट करने थे कि भाई हमारे डेटा में डू वी हैव आउटलायर्स और नॉट। So this is the very first method. By using that, we can predict, okay, whether we have outliers or not. Then there is this second method. Second method है Z score. Z score normalization. Okay. तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है guys कि सबसे पहले इंटरव्यू में तो कोई आपको निकाल मतलब आउटलायर्स निकाल के दिखाओ ऐसा कोई नहीं बोलेगा, बट दे विल डेफिनेटली आस्क कि व्हाट आर द मेथड्स आर देयर फॉर डिटेक्टिंग द आउटलायर्स। तो आपने कहना चाहिए कि भाई हम वी कैन चेक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। तो हमें पता चलेगा अच्छा यहाँ पर वी कैन प्लॉट यूजिंग एसएनएस और वी कैन प्लॉट अ केडीई प्लॉट एंड वी कैन गेट दीज डेटा वेदर वी हैव आउटलायर्स एंड जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। अब ये जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो बेसिकली कोई साइंटिस्ट है, आई डोंट नो हिज नेम, बट उसने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मूला किया, उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन या नॉर्मलाइजेशन नाम से कुछ फॉर्मूला है, लेट मी शो यू। सो दिस फॉर्मूला दे हैव बिल्ट, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी टेक्स्ट, एंड यहाँ पर हम उसको डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल यही डाल देते हैं इसके नीचे। तो दिस इज द फॉर्मूला, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू, क्या होता है यहाँ पर, लेट मी जस्ट चेक, म्यू इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, x इज द डेटा पॉइंट, और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसी के नीचे लिख देते हैं x इज द डेटा पॉइंट, म्यू इज द म्यू, एंड ये कुछ इस तरीके से। ओके, लेट मी डू दिस। ओके, लाइक दिस। तो व्हाट हैपेंड हियर, जो x है ये हमारे डेटा पॉइंट्स है, मतलब ये पॉइंट्स, these पॉइंट्स, ध्यान से देखना इस फॉर्मूला का, x z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। तो सिग्मा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन,
म्यू क्या है, इसको म्यू कहते हैं। म्यू इज आवर मीन ऑफ द डेटा, मीन निकाला गया है, मीन। ओके, एंड एक्स इज आवर डेटा पॉइंट्स। ठीक है, एक्स हमारा डेटा पॉइंट्स है। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं ध्यान रखता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा सेट है उसका मीन निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। यू रिमेम्बर, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना एंड मीन निकालना सीखा है। कैसे? लेट्स सो लेट्स से मीन अगर मुझे निकालना है मेरे RA2 का, तो आई विल से देयर आर मल्टीपल मेथड्स, बट सबसे पहले नमपाई में देख लेते हैं। नमपाई डॉट मीन अगर मैं बोल दूं, उसके अंदर मैं RA2 डाल दूं, अगर मैं मीन देखूं तो मेरे डेटा का मीन जो है वो है कुछ 57.95। तो मेरा मीन निकल गया, ये वैल्यू मेरी निकल गई। म्यू जो है ना मेरा, ये मीन निकल गया मेरा। नाउ आई नीड टू चेक द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, सिग्मा वैल्यू, मुझे वो देखनी है कि अरे ये वैल्यू क्या है, कैसे निकाल सकते हैं उसको भी हम नंपाई से निकाल सकते हैं। एस टी टी डी टी 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 है, एस टी डी ही है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो भी मैं कैसे कर दूंगा, इसके अंदर मैं रेट टू पास कर दूंगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे चेक करना है तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये मेरा मीन हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला के अंदर ये x के जगह पर आई विल पास माई दिस डेटा, एरे टू पास कर दूंगा। एंड यहाँ पर ये जो मेरा म्यू है, ये मेरा 57 है, ये जो मेरा क्या है, अल्फा है या सिग्मा है, दैट इज माई 82.68, एंड मेरा z स्कोर का वैल्यू निकल जाएगा। वंस आई विल गेट द z स्कोर, उस z स्कोर का एक थ्रेशोल्ड हम रख सकते हैं। ठीक है, अभी थ्रेशोल्ड क्या रहता है, तो थ्रेशोल्ड मीनिंग क्या रहेगा, यू विल गेट सम वैल्यूज, लेट्स से यहाँ पर दिखाएंगे। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं प्रोग्रामेटिकली आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे करा जाता है। ठीक है, तो लेट्स से हमें ये दो वैल्यू मिल गई। नाउ आई विल से मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है आउटलायर्स। तो मैं एक आउटलायर्स लिस्ट नाम से एक लिस्ट तैयार कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं डेटा अपेंड करूंगा। अपेंड हमने सबने सीखा है, मतलब जो भी मुझे अपेंड डेटा मिलेगा, मैं जो भी मुझे आउटलायर्स मिलेंगे मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा फॉर लेट्स से x का वैल्यू, मतलब ये जो मेरा x है ना, इस फॉर्मूला में ये x का वैल्यू इन एरे एरे टू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरे टू के अंदर एक फॉर लूप चला रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, इस एरे टू जो मैं हमारा ये एरे टू है, जा भाई, इस एरे टू के अंदर का हर एक वैल्यू हम इस फॉर्मूला में डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले 41, फिर 41 माइनस मीन रहेगा 57 डिवाइड बाई 82, जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम हर एक के लिए वो वैल्यूज निकालेंगे। वो क्या करेगा, एक एक नॉर्मली, मतलब एक वैल्यूज 0 to 1 के बीच में वैल्यूज क्रिएट करेगा, 0 to 1, या जो भी मतलब जो भी हमारे डेटा, एक बार दिखा देता है मैं, आई वोंट एक्सप्लेन लाइक दिस, लेट मी शो यू। सो सबसे पहले हम क्या करें, ये हर एक वैल्यू एरे टू से ले लेंगे, और उसको हम लेट्स से ये मेरा z स्कोर नाम से एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं ये फॉर्मूला डाल देता हूँ x वेल, मतलब ये x वेल। ठीक है, कौन सा, ये वाला x, ये वाला x माइनस 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 था, राइट, माइनस क्या था, मीन, माइनस था मीन, राइट, मीन कौन सा जाएगा, ये वाला मीन चले जाएगा, ये वाला, एंड डिवाइड बाय, डिवाइड बाय क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो अभी हर एक वैल्यू इस x एरे टू के अंदर की हर एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, वो डिवाइड, मिनिमाइज क्या माइनस हो जाएगा मीन से, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, z स्कोर मिलेगा। नाउ दिस z स्कोर हम क्या करेंगे, इसको एक थोड़ा एब्सोल्यूट नंबर में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब मुझे एब्सोल्यूट नंबर चाहिए। ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट z स्कोर, ये आई गेस मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर अंडरस्कोर चाहिए। ठीक है, अब मैं ये एब्सोल्यूट एब्स फंक्शन भी सीखा था एब्सोल्यूट वैल्यूज करने के लिए। ठीक है, तो मैं बस इसको प्रिंट कर देता हूँ z z स्कोर। ठीक है,
So if I run this, you can see all these Z score are getting printed. बट अभी यहाँ पर देखो, इसने क्या किया, सबसे फर्स्ट वैल्यू के लिए मतलब 41 के लिए 0.2, फिर 46 के लिए 0.2, फिर 15 के लिए 0.5 एंड सो ऑन, बट -200 के लिए 3 दिया है, ठीक है। सिमिलरली 1 एंड 2 भी दिया है किसके लिए, फॉर 260 एंड 200। यू कैन सी जो जो हमारे आउटलायर्स थे उन वैल्यूज के लिए ही जेड स्कोर ने बड़े वेटेज वाले वैल्यू दी है। तो अल्टीमेटली जेड स्कोर जब आप निकालते हो फॉर एवरी डेटा पॉइंट, यू गेट टू नो कि अरे मेरा ये एक आउटलायर है क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, ये एक आउटलायर है, ये एक आउटलायर है। सो दिस इज अगेन बिकम्स द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द जेड स्कोर, ठीक है। और अभी मैं इससे जेड स्कोर मतलब मेरे आउटलायर्स कैसे निकाल सकता हूँ। So there is one more loop you can run, like if you can say z score is greater than equals to मेरा threshold, okay। अभी आपको threshold रखना होगा, तो threshold हो गया वो threshold। तो अभी आपको एक threshold डिफाइन करना होगा। सो लेट्स से threshold अगर आपने 1.5 पकड़ा, ठीक है। तो अगर आपका जेड स्कोर का वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा या इक्वल्स टू होगा, तो आप क्या करोगे, ये आउटलायर का जो लिस्ट है ना, ये आउटलायर का लिस्ट है, इसके अंदर आप अपेंड कर दोगे, अपेंड कर दोगे एक्स का वैल्यू, मीनिंग इसके अंदर की वैल्यूज अपेंड कर दोगे। एंड नाउ व्हेन यू विल, लेट्स से मैं प्रिंट कर देता हूँ आउटलायर्स। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, जो जो आउटलायर्स थे मेरे वो सारे निकाल के देगा। तो दिस इज माई आउटलायर -200 एंड 260। So this is how you can detect the outliers. ये डिटेक्शन हो गया, एंड यू कैन फाइंड एग्जैक्ट वेयर विच आर माई आउटलायर्स, ओके। कौन से मेरे आउटलायर्स है, यू कैन फाइंड दीज आउटलायर्स, राइट। So this is how you can do some detection using Z-score, using normally distributed and you can treatments। तो ये सारी ट्रीटमेंट हम सीखेंगे, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द IQ इसके बाद, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव टू गो समवेयर, तो अभी के लिए हम यहाँ पर ही क्लोज करते हैं आज का लेक्चर, बट टुमारो फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे एंड इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू कीप अ क्लास टुमारो ऑल्सो, जिसमें हम आउटलायर ट्रीटमेंट कंप्लीटली क्लोज करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ गाइस, एनी क्वेश्चंस, किसी को एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस गाइस, एनी क्वेश्चंस, any questions guys? If you have any questions let me know. If you have any chota mota questions let me know, otherwise we can continue this lecture tomorrow, जहाँ पर हम कंप्लीट ट्रीटमेंट में IQR आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें यू विल गेट टू नो कि अच्छा देर इज वन वे टू डिलीट और ड्रॉप दी आउटलायर्स। मैं एक रियल डेटा सेट लूंगा, लेट्स से जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा, उस डेटा सेट पे हम काम करेंगे, उसके अंदर के हम जो भी आउटलायर्स रहेंगे वो डिटेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो ये मैंने एक काइंड ऑफ एक डमी एग्जांपल दे दिया बाय क्रिएटिंग अ array using the random number, right? Or then there is this box plot method also we will learn, and कैसे ड्रॉप करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। और इम्प्यूटिंग भी बताऊंगा, इम्प्यूटिंग मतलब क्या, ये सारी चीज है जिसके अंदर हम लेट्स से आप आउटलायर्स निकाल देते हैं और उसके अंदर यू ऐड दी अदर वैल्यूज, ओके, इंप्यूट कर देते हो डमी डेटा उसके अंदर, ठीक है। वो सारा सीखेंगे इन द कमिंग लेक्चर, ओके। सो दैट्स इट